Hello, Assalamu alaikum. How are you all? I hope all of you are doing fine. I'm here today with the second video of Sanger sequencing. I'll try to complete the topic today. I'm going to use a helping material for this topic, and then in the next lecture about Sanger sequencing that I'm going to upload, I will give you some important questions of Sanger sequencing. And you people can give me questions in the comment section also. And if you want to listen to any other topic, if you want to learn any other topic, then you can give me the request in the comment section also. Okay, then I'll upload the lecture for you people. Okay, let us start. Yesterday we completed about the tools of Sanger sequencing, the materials that are required in Sanger sequencing. I will try to complete this video today so that you can have a clear view of the Sanger sequencing. This video is also available in my Google Classroom. If any of you needs help, you can get the link of my Google Classroom from me, and then you can go to my Google Classroom and check the details over there also. We have a lot of material there in my Google Classroom. Now, DNA sequencing is actually a technique in which the precise order of nucleotides in a DNA segment is determined. It is a technique in which the precise order का मतलब ये है कि ये देखें कि ये thymine के बाद adenine, cytosine, guanine, thymine, guanine, adenine, मतलब these are arranged. We cannot think of any rearrangement in them, because if a rearrangement occurs in them, then that means that a mutation is going to take place, and mutation means abnormality. Okay? In DNA sequencing, what do? We try to find out the precise order, the exact order of nucleotides in a DNA segment which is unknown to us. It can be extracted from any crime scene. It can be extracted from a food sample. It can be extracted from an infectious agent, a viral agent that has a new DNA sequence that is causing diseases inside the community. It can be acquired from anywhere, and we have to look for the sequence that is present in it. Now, in the DNA sequencing, the main method that we use is the Sanger sequencing method. Maximal Gilbert is another method also. We will be discussing Maximal Gilbert in some other lecture, but today we are going to focus on Sanger sequencing. As I told you yesterday, it was developed by Frederick Sanger and colleagues at the University of Cambridge in 1977. It involves in vitro DNA synthesis, means that this DNA synthesis, it takes place outside the body. It takes place in a laboratory setup. This Sanger sequencing, the basic principle as we discussed yesterday, what is it? It is based on the principle and biochemistry of DNA replication that is taking place inside the living body, the semi-conservative mode of replication. Okay. In vitro DNA synthesis, what we are going to see is that what do we require? It is actually a synthesis which takes place in the external setup. So what do we require? Yesterday I told you we need the main DNA template strand, which has an unknown sequence. Okay. And 3:5 इसकी reading हम करेंगे. We are going to place it, label it from 3:5. Then we need a primer, which is an oligonucleotide which has been prepared inside the laboratory. And I told you yesterday that in vitro synthesis we use DNA primers. ठीक है, 10 to 20 long nucleotide sequences हैं, और इनको हम radioactive in nature most probably, and इनको हम use करते हैं 3 end को tag करने के लिए या prime करने के लिए. Then we need ddNTPs, the nucleotides, the 4 nucleotides that are present inside our body, inside our cell. These 4 nucleotides, deoxyadenine triphosphate, फिर cytosine triphosphate, guanine triphosphate and thymine. ये triphosphate हमने क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो आपका फॉस्फोरेट, जो इसका पॉलीमराइजेशन का जो रिएक्शन है, उसमें ये है कि पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है और ये मोनोफॉस्फेट लिंक में बन जाता है, लेकिन ट्राइफॉस्फेट फ्री स्टेट में हमारे पास ट्राइफॉस्फेट है. देन वी हैव डीएनए पॉलीमरेज which is highly high temperature जो है वो resistant है, और ये जो DNA polymerase है, it is extracted from the
thermus aquaticus bacteria that lives in hot springs. इसका function क्या है? Now the primer has been placed at point number 3, जो है ना वहां पर ये place हो गया है, ठीक है। अब प्राइमर का जो 3 एंड है that is going to be read by DNA polymerase. DNA polymerase is an endonuclease. It cannot read the sequences at the terminals. It can read the sequences within the DNA strand. It is an endonuclease enzyme. This DNA polymerase recognizes the 3 end of the primer, and then it keeps on adding the normal ddNTPs, in which the 3 end OH reacts with the 5 end P4 phosphate to form the polymer. ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन हुई, एंड नॉर्मली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। सेमी कंजर्वेटिव मोड है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, न्यू डॉटर स्ट्रैंड है दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर आपके पास 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज है, यहाँ पर वी आर जस्ट यूजिंग 1। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपके पास अब आप देखें what do you need? These are those materials which are very essential. What is the importance of the primer? It is very essential for DNA synthesis. Why? I have told you the DNA polymerase, it is an endonuclease. और endonuclease होने की वजह से ये क्या करता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है within the DNA। 3 एंड के साथ ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, the primer provides the initial 3 end hydroxyl group to form the phosphodiester bond with the incoming ddNTP. This is very important. इसका रोल क्या है? बिकॉज आपका डीएनए यहाँ पर इस जगह को अटैच नहीं कर सकता, वो इस 3 एंड पर इस चीज को अटैच करेगा। This is a 3 end of the primer, and this is the 5 end of the nucleotide. Sanger sequencing DNA sequencing technique makes use of modified deoxynucleotides which are called dideoxynucleotides. कल इसका डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया था। इसका डिफरेंस क्या है? अब let us see it again. This is a normal nucleotide. 1, 2, 3, 4, 5. This is where the difference is lying. This is point 3 जहां पर difference lie होता है, and this is the point जहां से reaction होता है 3:5 की attachment के लिए। ठीक है, ये ट्राइफॉस्फेट है, ये दो जब निकल जाते हैं then they are known as pyrophosphate। ठीक है, इसमें जो when the ddNTPs क्या है कि आपके 3 end पर just hydrogen present, and 3 end पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होने का मतलब है कि it is unavailable for a further reaction. This ddNTPs, they are actually the main component of the Sanger sequencing. ठीक है, whenever a ddNTP is added inside the DNA synthesis will terminate because ddNTP is not providing OH for the further reaction with the 5 of the next nucleotide. तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस वजह से they are also called chain terminating nucleotides, and Sanger sequencing is also known as the chain termination method or dideoxy DNA sequencing. कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तीनों नाम इसी के हैं, Sanger sequencing, chain termination method, dideoxy DNA sequencing. Dideoxys are also known as chain terminating nucleotides. ठीक हो गई बात। अब ये जहां जहां पर ये ऐड होंगे वहां वहां पर जो है ये उसको प्रोसीजर को बिल्कुल क्या करेंगे, they will totally stop the process from going on. अब हमने क्या चीज लेनी, we are going to take 4 tubes because we have 4 nucleotides, we will have 4 different types of ddNTPs, so we need 4 different tubes. The common components that we are going to put in these 4 tubes are, first of all, DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड बहुत सारा बनाएंगे। कल आपको मैंने बताया था कि पीसीआर से हमने बहुत सारी कॉपीज बनाई, एंड वी आर गोइंग टू पुट देम इन ईच ट्यूब। एक तो ये कॉमन कंपोनेंट है, चारों में डालेंगे 1, 2, 3, 4 में। फिर डीएनए प्राइमर बहुत सारा बनाएंगे, रेडियो लेबल्ड है। रेडियो लेबल्ड क्यों है वो आगे आपको मैं आई विल टेल यू पीपल व्हाई इट इज रेडियो लेबल। फिर डीएनए पॉलीमरेज है, फिर ddNTPs हैं आपकी, ये चारों एंटीपीज ना, ऑल दीज थिंग्स ये हम बहुत सारा लेंगे, एंड ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी इन ट्यूब 1, ट्यूब 2, ट्यूब 3, ट्यूब 4। ठीक है, जो चीज डिफरेंट है वो क्या है, वो है आपका ddNTP।
जो कि स्मॉल अमाउंट में होगा। अब नंबर 1 ए ट्यूब है, इसके अंदर ddATP जाएगा। we are going to label the tubes according to the ddNTP we are going to put। और ये थोड़ा होगा, थोड़ा क्यों होगा बताती हूँ। ddCTP, ddGTP, ddTP थोड़ा इसलिए होगा ताकि फिर इनकी जो इनकॉर्पोरेशन की फ्रीक्वेंसी है इट शुड बी कंट्रोल्ड, और ये बहुत ज्यादा जो है ना बार बार इसके अंदर इनकी इनकॉर्पोरेशन ना हो। ddNTPs is one of the four that are going to be present in each tube। हर ट्यूब में 1 ddNTP है। अब आप देखें कि हमारे पास मेन चीजें क्या है, प्राइमर है, डीएनए पॉलीमरेज है, ddNTPs हैं, टेम्पलेट है और ddNTPs हैं हमारे पास। ये सारी चीजें आर गोइंग टू बी प्रेजेंट विद अस एंड नाउ वी आर गोइंग टू अलाउ देम टू कैरी ऑन। The reaction is going to take place like that. The reaction will keep on taking place like that. ddNTPs are presented in red. Okay. Now look here. This reaction has occurred like that. Addition has taken place, but wherever the red sign is visible, it means that a ddNTP has been added there and that has terminated the reaction. We have fragments starting from the same point but ending at different points. We will have different types of fragments because we have different types of ddNTPs and we have different जो है ना वो replication points जो हैं वो हमारे पास different जगहों पर रुक सकते हैं। Now in the ddATP tube, ddATP, we have put dideoxyadenine triphosphate. Now, adenine is compatible to, it is going to combine with thymine. तो आपका ddATP का चांस है यहाँ पर और यहाँ पर, इसके साथ एडेनिन कैन कंबाइन। ठीक है, एडेनिन जब इसके साथ कंबाइन करेगा so what is going to happen, it is going to stop। लेकिन because it is in small amounts वो बहुत ज्यादा high frequency combination नहीं होगी। right now टर्मिनेशन हमारे पास जो है वो 3 पॉइंट्स पर हो सकती है जहां पर वी हैव अ चांस ऑफ एडेनिन कंबाइनिंग विद द ddATP। normal elongation is going to take place until the ddATP gets incorporated। ठीक है, और ये आपके 3 पॉइंट्स हैं जहां पर वी हैव अ चांस द ddATP might be incorporated instead of the DATP। ठीक है, अब ये चांसेस हैं हमारे पास, ये देखिए ये सूरत भी हो सकती है, ये भी हो सकता है और ये। नाउ लुक हियर, दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, they are starting from the same point but they are ending at a different length। look at this, and सारे के सारे they are providing the 3 end। this 3 end is going to provide the, it has to provide the OH for the next addition, but because the ddNTP is not providing the OH for the next reaction, so the reaction is going to terminate, and this is what happens in all the 4 tubes। अब आप देखिए फर्स्ट ट्यूब में ये 3 fragments हैं, सेकेंड ट्यूब में यही चांसेस हैं हमारे पास, guanine compatible with cytosine है, 3 points हैं जहां पर हम ये देख सकते हैं। Now look here, this is starting at the same point but ending differently। GTP देखिए कि जहां जहां पर साइटोसिन है वहां पर अगर GTP हो गया तो क्या होगा, और इसी तरह TTP है जो कि एडेनिन के साथ कंपैटिबल है। Now ये आपकी in 4 tubes में this is what is happening inside the 4 tubes and this is what you have got। Now the next point that we will be doing now is the separation of these tubes। Related with this topic now is another topic also which is known as gel electrophoresis। Gel electrophoresis is a procedure which is carried out to separate these components, just like electrolysis that we have studied in chemistry। We have 2 types of gel electrophoresis, polyacrylamide gel electrophoresis or agar gel electrophoresis। Agar gel is used for larger components
heavier components. Polyacrylamide gel is used for lighter and small size components. Because here we have small size components, so we will use polyacrylamide gel. We will not use the thicker gel, because in that gel the movement of these fragments will become difficult. Okay. Now the polyacrylamide gel electrophoresis setup is somewhat like this. We have the gel, we have the buffer, we have 4 wells produced for tube 1, tube 2, tube 3, tube 4, and these are going to be 4 lanes, right? अब देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है. We will pour the 4 tubes respectively in their respective well, and then we will allow the electric current to pass. As the electric current passes, these bands will start to appear. These bands are actually showing us the movement of the different size fragment. The lighter the fragment, the smaller the fragment, the faster it is going to move. The heavier the fragment, the slower it will move. ठीक है. अब आप देखें कि जो सबसे आगे है वो सबसे हल्का है. हमें ये पता है कि ये हमारी ट्यूब्स को हमने लेबल किया हुआ है कि ट्यूब 1 क्या थी, ट्यूब 2 क्या था, ट्यूब 3 क्या था, ट्यूब 4 क्या था. हमें ये पता है कि इस लेयर में हमारे पास ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है या साइटोसिन है या जो भी है. लेबलिंग में हमें पता चलेगा. ओके. नाउ ये आपके पास आ गया. लार्जेस्ट फ्रैगमेंट सबसे पीछे, स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट सबसे आगे. ठीक है, क्योंकि दे माइग्रेटेड वेरी फास्ट. अब हम यहां से लेबलिंग शुरू करेंगे नीचे से. दिस इज गोइंग टू बी द 5 एंड. ये क्या चीज होगी? ये इसका 5 एंड होगा, क्योंकि ये आपका जो डॉटर स्ट्रैंड है, दिस इज द लेबलिंग ऑफ द डॉटर स्ट्रैंड. आपकी डॉटर स्ट्रैंड पर लेबलिंग हुई है. ऑटो रेडियोग्राफी जो है, this is actually carried out because of the presence of the probes, और इसमें फिर आपको ये एक्सरे रेडियोग्राफी में ये पिक्चर आपको नजर आ जाती है. You can pick up the strands from the gel by a nitrocellulose paper. ठीक है, जस्ट लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर. और फिर उसको ऑटो रेडियोग्राफी से हमें पता चलता है. प्रेजेंस ऑफ द जो प्राइमर्स हैं, क्योंकि वो रेडियो लेबल हैं, इस वजह से आपको फिर आपके ये स्ट्रैंड्स नजर आ जाते हैं. यू कैन नॉट रीड द सीक्वेंस डायरेक्टली from the gel. You have to pick up the bands from the gel, and you have to pick up the bands soon, because if you allow the bands to stay on the gel, वो फिर उसमें सिंक कर जाएंगे. अच्छा, इनको उठाया, इनकी ऑटो रेडियोग्राफी हमने की, देन ये हमें इस तरह का कुछ जो है वो नजर आ गया. अब हमने अपनी इस एक्सरे फिल्म को क्या करना है, इसको हमने लेबल करना है अकॉर्डिंग टू द 4 ट्यूब्स दैट वी हैव. नाउ दिस लेन is showing adenine bands, this lane is showing cytosine band, this is showing thymine band, guanine band, and this is showing thymine band, and this is showing the distance and the size. The thicker and larger the band, the more the concentration. ठीक है, कोशिश है कि अब इसको हम लेबल करें. हमने यहाँ से इसकी लेबलिंग शुरू करनी है नीचे से. सो यहाँ पर आप देखें कि लोवेस्ट हमारे पास क्या है, एडेनिन. ये आ गया, हम यहाँ पर लिखेंगे एडेनिन. ठीक है, फिर उसके बाद the next one over here is going to be thymine. तो यहाँ पर we are going to label it as thymine, and then this is guanine. तो इसी तरह हम इसकी लेबलिंग करते जाएंगे, और ये नीचे से ऊपर we will keep on moving. The direction of reading of the sequence is always going to be from the bottom to the top, और ये इसका 5 end बनता है. Now the first one is the adenine. ठीक है, अब ये देखिए, ये आ गया हमारे पास एडेनिन, और यहाँ पर हम लिख देंगे A. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गया साइटोसिन, फिर हमारे पास ग्वानिन, फिर हमारे पास साइटोसिन, फिर हमारे पास जो है ये आ गया एडेनिन, ये आ गया साइटोसिन, ये आ गया थाइमिन, देन थाइमिन अगेन, देन ग्वानिन अगेन. फिर आप देखिए इस तरह लेबल करते 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 ये देखिए आपके पास ये पूरा लेबल हमारे पास आ जाएगा. थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये हमारे पास पूरी लेबलिंग आ गई. ठीक है, और ये आपका 5 एंड है डॉटर स्ट्रैंड का, और ये आपका 3 एंड है. इसके साथ नाउ द पेरेंटल टेम्पलेट दैट वी हैड, पेरेंटल टेम्पलेट क्या था हमारा, व्हेन वी कंपेयर इट विद द पेरेंटल टेम्पलेट, तो हमें नजर आएगा कि इट इज द एग्जैक्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द पेरेंटल टेम्पलेट. पेरेंटल टेम्पलेट हमारे पास क्या था, पेरेंटल टेम्पलेट, दिस इज द
daughter template that was prepared during the replication. The parental template हमारे पास guanine, adenine, thymine, cytosine, adenine, guanine, thymine, guanine, cytosine, adenine, thymine. ये आपका पेरेंटल टेम्पलेट है जो कि ओरिजिनल टेम्पलेट स्ट्रैंड था. इस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की वजह से आपको पेरेंट स्ट्रैंड भी पता चल गया कि व्हाट इज इट. नाउ दिस इज द अननोन स्ट्रैंड दैट वी हैड एट द स्टार्ट, और व्हेन यू चेक इट तो ये बिल्कुल हमारे पास क्या है, ठीक आया है. ठीक है. सो दिस इज हाउ द Sanger सीक्वेंसिंग इज कैरीड ऑन. And I hope it was not very complicated for you people. If you have any questions, do let me know. And आप लोग ऐसा करें कि आप next lecture में I'm going to give you some important questions of Sanger sequencing. That was all for today. See you people in the next class. Take care of yourself. Allah Hafiz.